Hello students, I hope everyone is getting in. Let us begin with. So first of all, I congratulate all of you being successfully standard 12 student. Keeping in mind the actual difficulties you students are facing, we proceed further for this new academic year. First of all, everyone will keep in mind the book is your best friend. Refer books time to time while studying because direct conversation is not yet possible. Offline college is not yet recommended by the government. So we have to proceed further with online lecture pattern only. So what you have to keep in mind, any doubt, please refer the textbooks. Read the textbook. Self-study is much important these days. So be very careful. Make the book your best friend. Today we have gathered together to continue with subject physics in first online lecture. I would like to continue with theoretical physics. This year, I will continue with theoretical physics. The chapter covered in theoretical physics are from chapter number 1 to chapter number 6. That is, we call generally paper 1. So paper 1, the very first chapter of the syllabus is rotational dynamics, and I would like to continue with that chapter at the beginning. So today we will stop or continue with first chapter of the syllabus. The name is rotational dynamics. As the name suggests, dynamics. Dynamics is the study of moving objects. The objects move under the action of force. So indirectly, in dynamics, this is one of the branches of the old science, mechanics. Actually, theoretical physics covers the sections mechanics, sound, heat, etc. In mechanics, very first chapter is of dynamics. Means we will study the behavior of moving object under the influence of external force, because unless the force acts on the body, it is not set in motion. So this is the meaning of dynamics. In this chapter, we have to study circular motion as well as rotational motion of the material objects. Last year in 11th, in chapter 3, we studied motions in plane. In this chapter, we discussed projectile motion, also the introduction for circular motion. Both these are planar motion. They are not one-dimensional motion or three-dimensional motion. They are plane. They take in plane only in 2 dimensions. So the introduction of circular motion is there in 11.
In the chapter Rotational Dynamics, we study its next part. It is continuation with the chapter Motion in Plane, which we already have studied in 11th standard. So, before proceeding further, let us recall what we studied in 11th standard में हम लोगों ने मोशन इन प्लेन स्टडी किया है. तो मोशन इन प्लेन का वन टाइप है सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन में लास्ट ईयर हम लोग क्या क्या सीखे थे? जस्ट रिकॉल द चैप्टर. इफ यू ओपन द टेक्स्ट बुक, द चैप्टर बिगिंस विथ recall what we have learned. So first we will learn or we will discuss about and then we will proceed further. So last year in 11th we studied circular motion in kinematical view. Kinematical point of view. Dynamics is learned under two sections. One is kinematical view and other is kinetics view. काइनेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिकल में क्या एज्यूम करता है? बॉडी सर्कुलर मोशन में है ही, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसकी एक्सेलरेशन क्या है, बस उतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं. वी डोंट गो इन डिटेल फॉर द कॉज ड्यू टू विच इट इज गेटिंग ऑल दीज क्वांटिटीज. तो काइनेमेटिकल में क्या होता है? विदाउट कॉज यू स्टडी द मोशन. एंड काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की काइनेमेटिक्स ये सब ब्रांच है, उसमें हम लोग फोर्स डिटेल स्टडी करते हैं. द कॉज ऑफ मोशन वी लर्न इन काइनेटिक्स. So last year in 11 we have introduced or you have learned circular motion from kinematical point of view. We describe or we introduce three terms. Last year आप लोगों ने क्या क्या सीखा है circular motion में? Three basic terms. First is displacement of the body in circular motion. Then we proceeded further to study the velocity and then we studied acceleration. These are the basic quantities you have to deal with while studying circular motion. You can take its analogy with translational motion. Translational motion में क्या है? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं लिनियर डिस्प्लेसमेंट. ऑल दीज आर लिनियर क्वांटिटी. ट्रांसलेशनल, स्ट्रेट लाइन मोशन और लिनियर मोशन, इसमें सब क्वांटिटीज लिनियर रहते हैं. और सर्कुलर मोशन में सब क्वांटिटीज एंगुलर रहते हैं. एंगुलर रहते हैं. द symbol used in linear motion for displacement is s. In circular motion is theta. Velocity in linear is given by symbol v, while velocity in angular is defined by omega, not w. It is omega, angular velocity. Acceleration is in linear is called linear acceleration, symbol small a. In circular motion, it is angular acceleration written by alpha. Last time we have discussed all these. In circular motion, to describe the motion of body in circle, we use polar coordinates. आप लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल किए थे. इट इज द पेयर ऑफ टू कोऑर्डिनेट्स. वन इज रेडियस वेक्टर and other is angular displacement. These two are sufficient to describe circular motion of any object. So these are called polar coordinates. So when circular motion we use this. If you take analogy, you can write relation between these three.
टेकिंग कंसिडरिंग एनालॉजी इन लिनियर मोशन, लिनियर मोशन में क्या रहते हैं, आप लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टेट करते हैं ना, हाउ मेनी आर दे, 3, v is equal to u plus at, final velocity, then the other is v square is u square plus 2as, और third is displacement a is equal to ut plus half at square। ये लिनियर के काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। इसमें क्या होता है, v a u t एंड s, ये 5 अननोन वेरिएबल्स है, पैरामीटर्स है। So if any 3 of them are known, you can find any 2 which are unknown, but at least 3 out of these 5 should be known to you while solving numeric or while learning linear motion। तो बाकी के 2 आराम से आप लोग निकाल सकते हो। Taking analogy with this motion, we can write kinematical equations directly in सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी एंगुलर है, तो वो will write it as omega 2 will be omega plus 1 plus a will be replaced by alpha angular acceleration, then final velocity, angular velocity omega 2 square will be omega 1 square plus 2 alpha s should be replaced by theta, and third equation you can write, this is linear displacement s, this will be angular displacement theta, so theta will be omega t plus half alpha t square। So these are kinematical equations we already have learnt in 11th standard में आप लोगों ने ये सब सीखा है। I am just recalling, I am just introducing what we have learnt in 11th। मैं खाली आपकी रिवीजन ले रही हूँ, आप लोगों ने ये सब 11th में लर्न किया है। 11th में किया क्या आप लोगों ने, we studied circular motion only from kinematical point of view। You didn't go in detail the cause why the motion is existing, ये हम लोगों ने ज्यादा सीखा नहीं है। अगर एक आधी बॉडी सर्कुलर मोशन में है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम की क्या होती है, क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी कैसे रिलेट करनी है, उसका एक्सीलरेशन का क्या है, ये खाली आप लोगों ने सीखा है। तो आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट लाइक दिस। अननोन आर ओमेगा 1 इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा 2 फाइनल वेलोसिटी, t टाइम इंटरवल, alpha angular acceleration, and theta is angular displacement। So these 5 parameters are there। If any 3 are known, using these equations you can find rest 2 parameters। This is just analogy, using analogy you can relate them। We also studied last year, so the relation between linear velocity and angular velocity, that was, क्या लिखते हैं आप लोग, linear velocity is r omega। What happens in circular motion, body traces the circular path, और ये circular path की हर जगह रेडियस should not change, then and then only the path is said as circular। It is a special type of curvy linear motion। ये जो curvy linear है ना, उसका ये special type है। Motions are broadly divided into 3 types। One translational, that is linear, the other group is called curvy linear, and the third is called vibratory। So curvy linear यानी कि क्या, वो straight line नहीं रहती, वो ऐसे भी हो सकती है, zigzag। This is curvy linear because every time the radius here is r1, for this curve it is r2, for this curve it is r3, the body is not tracing linear path,
Thus it is curvilinear. Curvilinear का स्पेशल टाइप है सर्कुलर, वेयर along the path रेडियस वेक्टर आप लोगों को मालूम है, ये भी हम लोगों ने लास्ट ईयर सीखा है. रेडियस वेक्टर इज द वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ at the position of the particle along the circular path at given instant. ये है P पॉइंट में उसका पोजीशन वेक्टर. अगर वो Q पे गया मोशन होते समय, तो this will be the position vector when particle is at Q. Position vector indicates the position of the particle performing circular motion at the given instant. तो क्या होता है, अगर टाइम t when particle moves from P to Q is very small, then instead PQ as a curve you can consider it as a straight line. ये जो है ना t अगर छोटा है बहुत, तो हम लोग PQ कर्व के बजाय स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर सकते हो. So along with all these quantities, angular displacement, angular velocity, angular acceleration for the particle in circular motion, side by side we can define linear quantities also. Linear displacement, its linear velocity and linear acceleration. Only the condition time t should be small. Then for this particle you define these three terms also, linear velocity, and then you can relate these terms SVA with theta omega alpha. These relations also you studied last year. ये भी हम लोगों ने last year सीखा है. Linear velocity is related with angular velocity, linear displacement related with angular displacement, and angular linear acceleration is related with angular acceleration. Simply you have to write R over here. These are the three equations relating linear and angular corresponding quantities for the particle executing circular motion. So all these relations also you have to remind. Suppose this time interval t is very small. Today I am taking only the revision. Next time we actually will start with the syllabus of 12th standard. So you have to revise all these. After finish of all lectures, you have to go through 11th standard book. 11th स्टैंडर्ड बुक रिफर करो, सब पढ़ो और बाद में 12 का चालू करो. दिस इज जस्ट रिकॉलिंग. सो ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. S is directed in the plane of motion. अगर ये ब्लॉक है वो लिनियरली जा रहा है, तो S की डिस्प्लेसमेंट भी यही प्लेन में आती है. Unlike S, this theta is not directed in the plane of motion. ये बात ध्यान से keep in mind. Remember, linear values all lie in the plane of motion, but in circular motion angular displacement is not lying in the plane. It is axial quantity. Axial यानी कि क्या, ये सर्कुलर पाथ का जो एक्सिस है, एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये ब्लैक बोर्ड है ना, उसको मैं ये परपेंडिकुलर निकालती हूँ. तो ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस पे हम लोग थीटा दिखाते हैं. ओमेगा in the direction of theta, alpha also is the axial quantity. So in circular motion we show the direction. ये जो मैंने इक्वेशंस लिखे हैं, ये इक्वेशंस लिखते समय मैंने साइन नहीं यूज की है, उसके डायरेक्शंस मैंने नहीं फोकस किए थे. दिस वेर देयर स्केलर फॉर्म्स. स्केलर फॉर्म था वो. अभी अगर द सेम इक्वेशन यू हैव टू राइट इन द वेक्टर नोटेशन, यू शुड कंसीडर द डायरेक्शन. सपोज ये सर्कुलर पाथ है in the plane parallel to earth surface.
सरफेस, 8 सरफेस को ये प्लेन, टेबल टॉप के ऊपर एक बॉडी सर्कुलर मूव हो रही है. I will draw its axis. So theta, even angular displacement, the angle traced by position vector in given time interval is displacement of body in circular motion. तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, बट डायरेक्शन दिखाते समय यू हैव टू शो द डायरेक्शन along the axis. The rule used and introduced earlier in 11th standard is right hand thumb rule. वो right hand thumb rule है ना, ये रूल के हिसाब से हम लोग डायरेक्शंस यूज करते हैं सर्कुलर मोशन में. इफ द मोशन इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड ले लो, thumb outstretched, other fingers curled. If the curled fingers show the motion of particle, in हो रहा है ना ये, तो thumb outstretched gives you direction of theta. So for anti-clockwise, theta is directed up. If the motion is clockwise towards you, ये finger आपके पास है, आपके पास आ रहे हैं, तो thumb is pointed down. So for anti-clockwise, the motion or the theta is directed downwards. परपेंडिकुलर ही रहेगा, खाली साइन उसकी डायरेक्शन चेंज होगी. ओमेगा अगेन इज इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा and alpha is in the direction along the axis in the direction of omega if alpha is increasing, and it is in the opposite to direction of omega if the motion is deaccelerating, उसकी वेलोसिटी कम हो जा रही है, तो अल्फा की वैल्यू नीचे है, ओमेगा के एग्जैक्ट अपोजिट आ जाएगी. So this also is very important. So remember all these points well. So when you want to express V is equal to R omega, V is linear velocity. I already had told if this interval is very small, this R can be considered as straight line, and hence you can assign linear displacement, linear velocity, linear acceleration for the particle in circular motion along with the all quantities related in angles for the same particle, and you can relate them. So here V is equal to R omega is its magnitude. This happens, the body can be set in circular motion only and only if centripetal force acts on it. Forces are of different types. For linear motion you need non-unbalanced single force. If the force in nature is centripetal type, centripetal में क्या होता है, at every point direction of force should change. ये है ना centripetal, towards the center. The force should always act towards the center and along the radius of the given position. तो ये क्या होता है, सेंट्रीपेटल में हर टाइम फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, एंड दिस फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन मतलब क्या है, सपोज द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, इट takes one for one rotation it takes the same time period, then it is called periodic. You have defined last year period, capital T, time taken by the particle to complete one revolution, 2 pi upon omega, and frequency, the number of rotations it completes in unit time as 1 upon t. ये सब फॉर्मूले आप लोगों को रिवाइज करने हैं, लास्ट ईयर में आप लोगों ने ये सब सीखा है. So centripetal force is necessary and its magnitude is mv square by r. So from next lecture we will actually start with dynamics, that is kinetics. हम लोगों ने अभी काइनेमेटिकल लिया है, अभी काइनेटिक्स लेंगे और उसका कॉज इन डिटेल लर्न करेंगे. So be ready with the actual syllabus to be started from the next
lecture. So today I am stopping here because the time is still there, so we can still continue for 2 more minutes. In the 12th textbook, immediately to the back side of front page of first chapter, they have given solved numeric. मैंने जो आप लोगों को बोला था ना, ओमेगा 2 ओमेगा 1 जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, उसके ऊपर बेस दे हैव सॉल्व न्यूमेरिक बुक में दिया हुआ है, वो आप सब लोगों को टेक्स्ट नोटबुक में कॉपी करना है. रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई डिस्कस्ड, उसका शॉर्ट नोट आप लोग लिखो. द नोट विल नॉट बी गिवन. जो हम लोग जब भी बोर्ड पे लिखेंगे ना, तभी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट लगता है वो यू हैव टू राइट इन यूर नोटबुक्स. नोटबुक तैयार रखो. फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट यू हैव टू कीप यूर नोटबुक अप टू डेट. जो कंटेंट सिखाया गया है उसकी डेट वाइज सब रिकॉर्ड आपको रखना है. तो जो आप लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा वो सब आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है. एंड एवरीवन विल सॉल्व न्यूमेरिक गिवन इन 12th standard textbook in back side of the first page of chapter rotational dynamics. It is just based on 3 kinematical equations of rotational motion. उन लोगों ने दिया है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय टी. ये कोई जरूरत नहीं है. They have used only the equation final angular velocity square is equal to omega 1 square plus 2as, and hence s will be omega 2 square minus omega 1 square upon 2 alpha. ये इक्वेशन यूज करके वो लोगों ने सम सॉल्व की है. they have asked you to find angle traced during the entire motion. So this equation you can use and you can easily get the solved numeric. Everyone will copy that numeric with understanding in the notebook. This is today's homework. समझा आप लोगों को? Everyone should get. So from next time we will start with actual syllabus. I am closing the meeting. Have a good day.